Welcome back, my dear students of grade 8. We are doing the first chapter of geography, that is resources. And in this chapter so far we have discussed about the resources, what are the resources and what are the characteristics of these resources. In daily life we use different types of resources to fulfill our basic needs. Like we use clothes, we use food, we use water, and we use electricity, and as you are using paper, books, pen, etc. And today we are discuss about the types of resources कि resources कितने तरह के हैं and from where we get these resources, हमें कहाँ से मिलते हैं. Today in this video we are going to classify these resources on the basis of different uses and different origin. Types of resources. Resources can be generally classified into following groups. First group is based on the level of development and use. It means that जो resources हमारे पास है वो कितने develop हो चुके हैं, means उनके बारे में हमें कितना पता है, क्या हमें उनका यूज़ करना आता है या नहीं. और जो भी हम रिसोर्सेज को क्लासीफाई करेंगे we classify on the characteristic that we discussed in the last video, that is the resources must be technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable. According to that we will classify the different types of resources. First type, based on the level of development, we have the actual resources and the potential resources. Actual resources means the extraction of resources involves many changes in the natural state of environment. The resources whose quantity is known as well as those in use are actual resources. ऐसे resources जिनके बारे में हमें पता है कि कितनी क्वांटिटी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, and we know the technique to use that resources, that is known as actual resources, or actually we are using that resources. For example, coal. We are using the coal, natural gas, petroleum, iron ore, etc. So these resources are actual resources. Next type is the potential resources. Potential means the resources around us may not be fully utilized. Means वो पूरी तरह यूटिलाइज अभी नहीं हुए हैं, पर उनके पास पोटेंशियल है हमारी नीड्स को पूरा करने का, पर अभी तक हमने उनको पूरा यूज़ नहीं किया है. For example, the wind energy or the solar energy in the different region of our country, for example in Gujarat and Rajasthan, but that resources are not fully utilized. अभी तक पूरी तरह यूटिलाइज नहीं हुए, but they have the potential to fulfill our needs. Next type, that is the based on the origin. Origin means जो resources हम यूज़ कर रहे हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं. That is natural resources and the human sources. On the basis of reason we have two types of resources. Natural resources, these resources are drawn from the nature. जो हमें nature से मिले हैं, these are natural resources. For example, air, water, soil, mineral, etc. all forms of life on the earth, that is a natural resources, and these are the free gift to man, and man has to modify, और मैन ने उनको अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए modify means चेंज किया है. एयर, वाटर, सॉयल, मिनरल्स जो भी हमें नेचर से मिला है उनको अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए वो मॉडिफाई करता है, उसको चेंज करता है. फॉर एग्जाम्पल, द एयर वी ब्रीथ कैन बी यूज डायरेक्टली, हम डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, वाइल वाटर इन द मोस्ट सिटीज़ हैज़ टू बी प्यूरिफाइड बिफोर यूजिंग इट. पर सिटीज़ में पहले वाटर को प्यूरिफाई करना पड़ता है, फिर हम उनको ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं. दिस प्यूरिफिकेशन नीड्स नॉलेज, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी टू मेक देम यूजेबल. तो इस प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस में मीन जो हमें नेचर से मिला था वाटर, उसको आगे रिसोर्स बनाने में हमें क्या चाहिए था, नॉलेज, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी. नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स, biotic and abiotic. Biotic means from the living resources. Living resources means जो resources हमें
लिविंग थिंग से मिलते हैं जिनमें लाइफ है, दैट आर नोन एज बायोटिक रिसोर्सेज. फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बीइंग. एग्जाम्पल फ्रॉम द एनिमल वी गेट द मिल्क, मीट, एटसेट्रा. तो दीज आर द बायोटिक रिसोर्सेज. एंड अबायोटिक मीन्स वे सोर्सेज जो हमें नॉन लिविंग थिंग से मिलते हैं एंड सपोर्ट ऑल लिविंग बींग्स. जो भी लिविंग बींग्स हैं अर्थ के ऊपर उनकी हेल्प करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी नीड लैंड, मिनरल्स, फ्यूल एटसेट्रा फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ एंड टू लिव कंफर्टेबली. क्योंकि हमें लैंड चाहिए. लैंड इज ए नॉन लिविंग थिंग. फ्यूल, मिनरल्स, नॉन लिविंग थिंग्स, बट वी नीड दीज थिंग्स टू live our life comfortably, because land we use for making industries, houses, for doing agriculture, etc., and minerals and fuels we use for energy. Biotic and the abiotic resources. Biotic means the resources that we get from the living things. Abiotic means that we get from the non-living things. Living things like plant, animal, fungus, bacteria, protists, etc. And non-living, for example, water, soil, air, light, etc. Next is human resource. The physical and the mental abilities of the human being modify natural sources into the more valuable resources. The ability of the human being is called human resource. हर एक ह्यूमन बीइंग के पास कुछ एबिलिटी होती है, कुछ स्किल्ड होती है, जिससे वो जो भी नेचर से मिला है उसको वैल्यूएबल रिसोर्स में कन्वर्ट कर देता है. फॉर एग्जाम्पल ही यूज द लैंड फॉर एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर के लिए लैंड को यूज़ किया है. एंड आल्सो यूज दैट लैंड फॉर मेकिंग हाउसेज, रोड्स, ब्रिजेस. जो भी ह्यूमन बीइंग ने बनाया है, दैट ही यूज्ड हिज स्किल and knowledge. That efficiency of the human being is known as the human resource. These are the natural sources: sun, forest, rocks, minerals, animals, water, soil, etc. These are the free gift of the nature. And these are the man-made resources, that is human resources, which are made by the human by using the natural resources to fulfill their needs. Next type is on the basis of exhaustibility. Exhaustibility means जो भी हमारे पास नेचुरल सोर्सेज हैं वो हम कब तक यूज़ कर सकते हैं. These are of two types: renewable resources and non-renewable resources. Renewable resources. These resources get renewed or replenished quickly after use and are not affected by any physical or chemical change. जो resources get renewed means जल्दी से नए बन जाते हैं, मीन्स दोबारा हम उसको यूज़ कर सकते हैं. दैट इज़ नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज. कोई भी फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज का उन पर कोई अफेक्ट नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल बायोटिक सोर्सेज लाइक ग्रास गेट रिप्लेनिश क्विकली आफ्टर ग्रेजिंग. क्योंकि एनिमल्स ग्रेजिंग के लिए जाते हैं, वो ग्रास फिर से दोबारा ग्रो हो जाती है. सो दैट इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स. Similarly, continuous or flow resources like sunshine, wind, water are renewed automatically after use. जैसे कि sunshine, डेली आपको sunshine मिलती है. Wind energy, water sources you can use daily and they are get renewed quickly. So these are the renewable resources. Next is the non-renewable resources. These resources cannot be replenished once exhausted. अगर ये resources एक बार फिनिश हो जाएंगे तो दोबारा replenish means renew नहीं हो सकते. These non-renewable resources are non-living और abiotic. ये non-living resources हैं but are life supporting resources. पर अर्थ के ऊपर हर तरह की लाइफ को सपोर्ट करते हैं, means they are necessary for the life on the earth. These include fossil fuels like coal, oil, natural gas and minerals. All these energy sources are compulsory for the life on the earth. But these are non-renewable resources and they take millions of years to get renewed. Sources. Renewable sources which get renewed after some time. The non-renewable not get replenished or renewed when they get exhausted.
For example, renewable sources, hydropower, energy, biomass, geochemical, wind energy, and non-renewable sources like fossil fuel, coal, nuclear, natural gas, etc. That's all for today's video. In the next video, we will discuss about the next type of resources, that is on the base of ownership and the basis of their use and utility. I hope today's concept is clear to you. Thank you for watching this video.